Hi guys, we'll be starting with lesson 4, the Foreign Contribution Regulation Act 2010. Now let's understand what this chapter deals about. Firstly, let's say if this is India, okay, and we are getting donations from abroad. We're getting donations. Tell me one thing, अच्छा है या नहीं? पैसा इंडिया में आ रहा है, should we be happy or sad? You all can unmute and tell. We should be really happy. पैसा आ रहा है तो आने दो, ठीक है? So we are really happy when we get donations from abroad. Now when I say abroad, I mean a foreign source. Foreign source से पैसा आ रहा है. Now foreign source means what? Either जो भी रहेगा बाजू वाली पार्टी इंडियन होगी या फिरंग. It would be an Indian party or a foreign party? Foreign. So it could be a foreign company. जो भी तुमको foreign पता है बोलो. Foreign क्या हो सकता है? Foreign government, foreign person, individual, foreign trade union or any kind of organization that is giving a donation. So we should be really happy. This law regulates these this law regulates these donations. What India does, they have made a law with respect to this called as Foreign Contribution Regulation Act, okay, FCR है. और बिना देखे मुझे बोल सकते हो कि कौन से ईयर में आया होगा ये एक्ट? कैन यू टेल मी? 2010, बट इफेक्ट में 2011 में आया था, ओके. अब ये जो फॉरेन सोर्स से पैसा डोनेशन आ रहा है, व्हाट लॉ डज इट? रेगुलेट्स इट. व्हेन आई से रेगुलेट मतलब क्या? इट रेगुलेट्स डोनेशंस. नाउ रेगुलेट्स में कहीं ना कहीं वो लोग अलाउ करते हैं, दे परमिट आफ्टर अप्रूवल, ओके. और इन सर्टेन केसेस वो लोग प्रोहिबिट ही कर देते हैं कि नहीं आप ले नहीं सकते हो, इट इज प्रोहिबिटेड. नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, यू ऑल हैव टू टेल मी कि वो अप्रूवल रूट में जाएगा या प्रोहिबिटेड रूट में है. अगर एक डोनेशन आ रहा है टू अ बीइंग ह्यूमन, जैसे एनजीओ को आ रहा है, सो व्हाट वी शुड डू? वी शुड अलाउ इट और नो? अप्रूवल. तो गवर्नमेंट के पास से अप्रूवल ले लो, आ जाओ. तो ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोई भी एनजीओ हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, जो हमें ऑलरेडी पता है, इसके रूट्स पता है कि इट इज हैविंग अ सोशल कॉज और सोशल वेलफेयर के लिए है, तो उसको गवर्नमेंट बोलती है आप हमको पूछ लो कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए होगा, तो पैसा आ रहा है, आने दो. But tell me one thing, should we allow this? Money is coming to a political party. एक पॉलिटिकल पार्टी को आ रहा है, बीजेपी को फॉरेन से फंडिंग आ रहा है, should we allow or no? Prohibit. Now you are saying prohibited, ठीक है. मुझे बताओ, जजेस को फॉरेन से पैसा आ रहा है, कोई जज को डोनेशन देना चाहता है, जैसे कितना मेहनत करता है, कितना जजमेंट देता है, मैं उसको डोनेशन देना चाहता हूं, अप्रूवल रूट में डालना चाहिए या प्रोहिबिटेड ओनली? इट शुड कम इन विच रूट? प्रोहिबिटेड. अगेन न्यूज चैनल्स, न्यूज एडिटर्स, क्या होना चाहिए? It depends on the reason, sir. डिपेंड ऑन द रीजन, ठीक है. नाउ व्हाट लॉ हैज डन, वेरी इंटरेस्टिंग, लॉ ने इसको सीधा प्रोहिबिटेड में डाल दिया, because they all are having a public duty to perform. They have a public duty to perform. If donations are given to these people, it could affect their public post, it could affect the public confidence, it could affect the national security. आज अगर डोनेशन फॉरेन सोर्स से कोई रूलिंग पार्टी को आ रहा है तो वो लोग लॉ वैसे ही पास कर देंगे.
वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते पॉलिटिकल सिनेरियो, दे कैन इन्फ्लुएंस कर सकते कोई भी जजमेंट, कोई भी केस को, वो लोग पब्लिक ओपिनियंस को रूल कर पाएंगे. तो लॉ ने ये सारे केसेस में ब्लैंकेट प्रोहिबिशन. व्हाट रीजन कुड अ जज आस्क फॉर मनी? What could be the reason for a news channel to ask money from a foreign source? Now, if the foreign source से पैसा आने लगा ना, in all these places, they could be more detrimental to the national security. Right or wrong? ये सब cases में अगर allow किया government ने, so it will be harmful to India, harmful, or I could say detrimental to national security. So actually ये जो law है, it has been passed by the Ministry of Home Affairs, passed by the central government, by the central government. तो अप्रूवल किसका लोगे जब भी अप्रूवल लेना है? इफ दिस इज अ सेंट्रल लॉ, सो घड़ी घड़ी किसका अप्रूवल लेने बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी देर आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. एंड नॉट ओनली दिस, इट कम्स अंडर, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. सो परस्यूएंट टू दैट, to achieve that objective, they have passed the law. Clear? Now let's see from the notes. Okay, this also, whatever I have highlighted, you can highlight with me. Okay, firstly, Foreign Contribution Regulation Act is a internal security legislation and regulated by the Ministry of Home Affairs, which prohibits donations, which we will see what it means, for certain classes of person. वो देखेंगे कौन से क्लासेस को ब्लैंकेट प्रोहिबिशन है, और वही एग्जाम में आता है. सेक्शन 3 में भी दिया है, सेक्शन 6 में भी दिया है. इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स ओके सर्टेन पर्सन फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. वील सी. अगर रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं तो थोड़े लोगों को अलाउ भी कर रहे हैं, जिनके पास में कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम्स है. उनको क्या बोल रहे हैं, आप गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर हो जाओ और आप फिर ये सब एक्सेप्ट कर सकते हो. नाउ जो डोनेशन भी आता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करें. वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशंस. जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फॉरेन डोनेशन जो आ रहे हैं, इसको वो लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. वन इज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द अदर वन इज अ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. तुम मुझे बताओ कि डोनेशन किस फॉर्म में हो सकता है? एक क्या, कैश और काइंड. परफेक्ट. सो एक या तो मैं सीधा कैश या गुड्स दे रहा हूं, या मैं कोई फॉरेन से कोई हॉस्पिटैलिटी या आई कुड से सर्विस ले रहा हूं. ओके, सो डोनेशंस. सो द फॉरेन डोनेशन जो अब्रॉड से आ रहा है वो या तो गुड्स आ सकते हैं या सर्विस आ सकता है. अब गुड्स में क्या होगा, सोचो मेरे को कोई फॉरेन कंट्री से सीधा कैश दे रहे, तो व्हाट इज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड ACS. ओके, राइट इट विथ मी. ACS मतलब क्या? या तो कोई तुम्हें कोई आर्टिकल दे रहा है, या कमोडिटी, या करेंसी. आई कुड से करेंसी मीन्स हार्डकोर कैश. करेंसी दे रहे हैं, ये लो भाई इतना पैसा आपको हम लोग दे रहे हैं, करेंसी. या फिर कोई सिक्योरिटी या शेयर्स दे रहे हैं मार्केट के. सो कहीं ना कहीं मुझे फॉरेन कंट्री से कोई डोनेशन, गिफ्ट मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एनी आर्टिकल. किसी ने मेरे को गाड़ी गिफ्ट कर दी अब्रॉड से, या किसी ने मेरे को पैसे दे दिए, मेरे अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया पैसे, या किसी ने शेयर्स मेरे नाम पे फ्री में डाल दिए. सो ऐसा रख नहीं सकते, फॉरेन सोर्स से ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए
थोड़े लोग के लिए सीधा प्रोहिबिशन है, या फिर सर्विस के लिए दे रहे हैं. अब सर्विस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी मीन्स व्हाट? तुम्हारा स्टेइंग, ट्रैवलिंग का खर्चा किसने स्पेंड कर दिया, किसी ने तुम्हारा लॉजिंग, बोजिंग, और आई कुड से स्टेइंग इन द होटल, उसका अच्छे प्रीमियम हॉस्पिटल इसमें रह रहे हो. नेक्स्ट और क्या हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, समवन्स पेइंग फॉर योर मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ये भी एक सर्विस ही हो गया. कोई तुम्हारे लिए लेट्स से कोई एजुकेशन की फीस भर रहा है, तो ये सब फ्री में अगर फॉरेन सोर्स से आ रहा है तो हम लोग उसको फॉरेन डोनेशन बोलेंगे. थोड़े लोगों के लिए आफ्टर अप्रूवल एंड थोड़े लोगों के लिए सीधा ब्लैंकेट प्रोहिबिशन. समझ में आया? ये सिंपल सी बात है. सो व्हाट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? जस्ट रिमेंबर दिस, दे आस्क इन द एग्जाम, व्हाट इज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? सो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन is receiving ACS from a foreign source, receiving article, currency or security from a foreign source. Or what is a foreign hospitality? Hospitality is receiving or staying, any kind of services from a foreign source. Now let's start with the chapter, okay? So firstly we'll just see the meaning, and I'll be sending you this also. The objective of the Foreign Currency Contribution Regulation Act is to regulate and control the acceptance of foreign contribution and foreign hospitality by certain persons. मुझे बोलो contribution क्या होता है? It is goods or service? Goods. और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या है? सर्विस. परफेक्ट. ओके. दिस एक्ट सीक्स टू रेगुलेट फॉरेन फंड्स टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस. द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट एक्टिविटीज विच आर डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट. बिकॉज अगर फॉरेन से पैसा आने लगा ना, तो दे विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द एंटायर पॉलिटिक्स इन इंडिया. इट प्रोहिबिट्स the acceptance or utilization of foreign contribution or hospitalities which may be detrimental to the national interest. If today a judge is getting funds, it will affect the entire belief in the judicial system. Now when this act came into force, it came on 1st May 2011. It is internal security legislation regulated by the Ministry of Home Affairs. Okay, now let's see definition में foreign contribution means a donation received from a foreign source, and the donation could be any article, any currency or any security. What is hospitality? It means any service from a foreign source for providing cost of travel or free boarding, lodging, transport or medical treatment. Clear है ना? Then comes foreign source. मतलब क्या? Foreign government, foreign company, foreign any kind of agency, any kind of corporation which is registered abroad, any kind of foreign trade union, foreign trust, foreign society, foreign citizen. ये सब जो भी फिरंग है, जो भी बाहर इनकॉर्पोरेट या बर्थ हुआ है, वो सब फॉरेन सोर्स. सो लेट्स गो फ्रॉम द मॉड्यूल. दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस यू नीड टू कोट इन द एग्जाम. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द FCRA that we just did? It is to regulate for some and prohibit for some the acceptance of foreign contribution and foreign hospitality, all those activities which are detrimental to the national interest. Now you can take this same thing. It came into effect on 1st May 2011. Now few definitions, you can read through the definition. The important ones are foreign contribution, as we did. Then we did what is foreign hospitality, and we did what is a foreign source. Now when I say political party, कि political parties are prohibited from receiving money, तो political party क्या हुई?
What do you mean by a political party? So they are saying any association or body which is registered with the Election Commission of India, okay, or which has set up candidates for election. So they are a political party. Now coming to the important sections, the very first important section is your section 3. We'll try to go in order and I'll tell you which one comes in the exam. Okay. Section 3 says prohibition of acceptance of foreign contribution. मतलब goods foreign source से कौन accept नहीं कर सकता. तो यहाँ पे लिस्ट दिया है, मैंने थोड़ा अच्छे से बनाया हुआ है, तो I'll do from there. See here, section 3 subsection 1. They have repeatedly asked in the exam. You can mark it as important. Okay, so important. Firstly, you only think normally you will understand who should not be allowed to receive foreign funds as donation. Charity दे रहे, क्या तुम कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन को नहीं दे सकते, न्यूज़पेपर को नहीं दे सकते, जजेस, एनी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, अ पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुम उसको डोनेशन दोगे तो आर यू ट्राइंग टू influence the political system, the legal system? The entire confidence of the people will break if they started getting charity from abroad. Political parties, political organizations, anyone who is engaged in audio visuals, okay, or any columnist, cartoonist, editor, owners, any of them, okay, so they are prohibited. Then comes section 4. पहले सेक्शन 3 मॉड्यूल से भी कर लेते हैं. सो इट इम्पोजेज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, एनी करेस्पॉन्डेंट, एनी कॉलमिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, प्रिंटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, जज एंड सो ऑन. नाउ दे आर सेइंग कि नो पर्सन शुड ऑल्सो इनडायरेक्टली ट्राई टू रिसीव फंड्स ऑल्सो. For example, let's say a judge and there is a foreign source, okay, कोई foreign source है, क्या वो जज को डायरेक्टली पैसे दे सकता है? अभी after you read the law, you tell me, can they give it directly to the judge? Yes or no? Can you give donation to the judge? No. No. कौन सा सेक्शन बोलता है नहीं कर सकते? 3 subsection 1. 3 subsection 1. This you have to remember with the section number. Not only that, it says that no person should also receive these funds to source it to someone else. मतलब मैं कोई इंडियन को दे दूं और फिर इंडियन को बोल रहा हूं तू फर्दर जज को दे देना. No person who is resident in India should also accept any foreign contribution on behalf of any such persons who are prohibited from receiving this money. Clear enough? That much is enough. Then comes section 4. Sir, Then comes person to whom section 3 does not apply. Now section 3 was talking about donations, but here if you have worked hard for the money, you worked, you put in efforts, it's not free of cost, then can I accept? Then Yes. can it be called as foreign contribution, foreign charity? no. No, it will be called as, Foreign earnings. it will be called as a foreign income. It will be called as a foreign income. So for example, अगर Google, now Google has a company called as Google India, Google India, और उसके अंदर वो एम्प्लॉइज को पे कर रहा है, and these employees are getting paid salary. Tell me one thing, can this be called as charity or donation, or can it be called as foreign contribution? No. No, because ये एम्प्लॉय बोलेगा मैं मेरे से पूरा, यू आर मेकिंग मी वर्क हार्ड and then you're paying me, then how is it a donation?
So should that salary, wages, remuneration for which you have worked hard be considered as a contribution, and you have to take central government approval for this? Yes or no? Should you require central government approval, or this is just a normal course of business that is happening? Normal course of business. So this is normal course of business. So all this is allowed. Section 3 does not apply. Section 3 prohibits it. ये सब prohibited नहीं है. These are allowed. So these are, you worked hard for it. It's your foreign income. So for example, ये भी exam में आ चुका है. Salary, wages, other remunerations due to the person who was working in the ordinary course of business. Even the next one you see, any kind of payment during the course of trade and commerce in the ordinary course of business cannot be considered to be charity. It does not apply. You can freely receive the money. Now you tell me, ये केस में एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी उसके एजेंट को पे करना चाहती है फॉर वर्किंग हार्ड इन इंडिया. Will this be considered to be a contribution and charity, or it should be allowed? So even payment to agent is allowed because the agent is working hard. A gift, you think gift should be allowed? No. But gift up to a certain limit they are saying is allowed. See, gift made to a person who is a member of any legislature delegation, provided that such gift was accepted in accordance with the rules specified with the central government, will come here. Means what? Let's say I'm giving an example of like a scholarship. Harvard is there. Harvard wants to reward a student who has worked really hard and invented a product or done extra in his academic. He has been exceptional, and they want to give him a gift, or I could say like a donation. Should this be allowed? But it is along with the central government procedures and everything, disclosures all have been followed. Should it be allowed? Yes. Yes. So even a gift with the central government procedures followed, any kind of scholarship, stipend of like nature, everything is allowed. Receipt from a relative, again that also they have kept it as allowed, because if let's say my wife has gone abroad, she's gone for a job and I am jobless in India, okay, she goes there and continuously she's paying me money for my sustenance. Now tell me one thing, should that be allowed? Yes. Yes. So obviously why would you be against me? It is allowed. Let money come to me and me be happy. Okay, can it be called as a donation? No. Technically no. Okay, because we are somewhere related. Okay, so it happens, it's like a payment to a spouse, payment to a family member, payment to a relative. Law is keeping all that is allowed, but you have to follow the central government guidelines. Okay. So we did our section 3, a sweet little section prohibiting, what were they prohibiting? Prohibition of foreign contributions by certain individuals. Then came our section 4. What was section 4? Cases where it was allowed, permitted transactions. Permitted transactions which are allowed to accept foreign contribution. Now we're doing section 5. Section 5 is really not important. So it's not important, but let's see what it is. Procedure to notify a organization as a political nature. So अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन कमीशन के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है बट फिर भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव इन अ नोटिफिकेशन इन इट्स ऑफिशियल गजेट एंड ऑर्डर दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर. अगर क्लासिफाई कर दिया पॉलिटिकल नेचर तो तुम सेक्शन 3 के हिसाब से पैसे नहीं ले पाओगे. So what happens? Your central government
is issuing a notification where they will declare an organization which is not registered with the election commission yet but is a political organization. It will declare it to be a organization of a political nature. Clear it now? So maybe we can have a party that you have made, and this party is into politics, where he has a political inclination but is not yet registered with the election commission. So government can then say that ये इसको भी declare कर दो. काफी हमको लग रहा है कि ये this could be the B of your party B of your BJP or party B of your Congress. Congress cannot directly take. So what it will make this group and it will say वो group को पैसा मिल रहा है and that group will give it to me. So they will just declare that other group also as a organization of political nature. Like even if you see, I don't know, there is BJP. BJP is said to have links with RSS. It also has links with one Delhi के अंदर एक they were having, which is the youth wing of BJP. Which one? ABVP. Okay. So now these, imagine if these are not registered with the election commission but seem to have a pretty much political inclination. So the government can declare them also to be a political party, and then they will also be restricted from taking any foreign donations. So not that important. Now I told you the next important section. Section 6. Now this was declare a organization as a political party or political nature. Now coming to section 6. ये सेक्शन 3 एंड सेक्शन 6 में काफी कनेक्शन है. खाली ये क्या था, इट वॉज प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. दिस विल बी प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन पर्सन्स. जो सर्टेन पर्सन है वो एग्जैक्टली सेम है. कौन कौन से है, कैन यू टेल मी? तो सेम पीपल like your judges etc, government servants etc, they cannot accept. तो यहाँ पे दिया हुआ है. So it prohibits acceptance of foreign hospitality by certain persons except with the prior consent of the central government. Accordingly, no member of legislature, office bearer of a political party, a judge, a government servant, a government employee, or any employee of an organization controlled by the government shall accept a foreign hospitality except with the permission of the central government. But now tell me one thing, ये एग्जाम में आ चुका है. You only tell me, it's pretty logical, I think you'll be able to crack it. If imagine there is this judge, he had gone abroad, and abroad he suffered a heart attack. He got a heart attack. Okay. Now tell me one thing, वहाँ पे immediately he could not inform anyone. Can the foreign company or foreign government give him, which I am calling as a foreign source, give him medical attention? Yes. या कि उनको बोलेंगे जाओ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके आओ, तो बोलेंगे नहीं, अगर सडन इलनेस हो गया है तब आप दे दो. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज लाइक अ सर्विस ओनली, आप दे दो ये सर्विस, रुकने की जरूरत नहीं है. सी, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी
to obtain any such permission for an emergent medical aid needed on basis of sudden illness during a visit outside India. But where such foreign hospitality has been received, the person receiving such hospitality shall give within 1 month from the date of receipt of such hospitality intimation to the central government of the receipt of such hospitality. Now again we finished that also, pretty simple. Now coming to section 7. Now let's see what is section 7. That's also pretty simple. Prohibition of transfer of foreign contribution to any other person. So prohibition of transfer of foreign contribution. Again I think you'll be able to crack it. अगर allow किया central government ने, central government permitted Mr. A to receive foreign donations, foreign contribution बोला कि Mr. A allowed है. Can Mr. A transfer it to Mr. B? You think it should be allowed for A to transfer it to Mr. B? Unless he has the permission. Yeah, so it should not be allowed for him to transfer it unless he has already told the central government or this other person has also received the approval. Right or wrong? Right. So let's see. The section 7 prohibits transfer of foreign contributions to other persons. Accordingly, no person who is registered and granted a certificate or obtained permission under the act has received a foreign contribution. So a person has received a foreign contribution shall transfer. So prohibits no person who has received any foreign contribution shall transfer such foreign contribution to any other person unless such other person also has been granted the certificate or obtained the permission of the government under the act. Clear है ना? अब ये important है, सेम चीज रिपीट कर रहे हैं. Can you tell me कौन सी सेक्शन में दिया हुआ है? Prohibition debarring a person from receiving foreign. Section 3 subsection 1. ठीक है, so this has come in the exam also, the same list you can put up. Now utilization of foreign contribution. Section 8. Again very simple. Section 8. Utilization of foreign contribution. अगर मैं utilize मैंने लिया है for purpose A, can I transfer it to purpose B? अगर मैं पैसे उठा रहा हूं एक पर्पस के लिए, तो क्या मैं उसको डाइवर्ट कर सकता हूं पर्पस को? अगेन सिंपल आंसर है, क्या है? प्रोवाइडेड दैट एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड and granted a certificate or has taken a prior permission, that person has received a foreign contribution, he shall utilize such contribution for the purpose he has received. Right or wrong? सिंपल है, जिसके लिए पैसे लिए वही उसके लिए यूज करो. Further, any contribution or income shall not be used for speculative purpose. क्या वो ट्रेडिंग कर सकता है ये पैसे से? चैरिटी के लिए उठा रहे हो तुम, बोल रहे हो तुम स्पेक्यूलेशन ट्रेडिंग करोगे, घोड़े पे लगाओगे, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स बेटिंग, गैम्बलिंग, वो सब कर रहे हो तो सब नॉट अलाउड. एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट and given a prior permission and receives a foreign contribution shall not defray means divert or basically deviate as far as possible such sum, ये भी देखोगे, not exceeding 50% of such contribution to meet administrative purposes. मार्क करो important, ये 2020 के अमेंडमेंट में है कि ये जो 50% है ना, इसको रिड्यूस करके 20% कर रहे हैं वो लोग. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या सीन है ये तो अभी समझते क्या है. इमेजिन मैंने पर्पस पैसे उठाए,
कोई चैरिटेबल पर्पस बोलो. मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और ये पर्पस क्या है? एनिमल्स के लिए. पीटा बताया ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स आई हैव टेकन मनी. वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स, एनिमल्स, मैन, जो भी ऐसे एनिमल्स हैं, वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए मैंने ये पैसे उठाए. अब सोचो मेरे को पैसे आए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़. सो एंड इट इज सेड दैट आई शुड यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स. हाउ मच मनी शुड आई यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम योर? 1 crore. एंटायर 1 करोड़. बट मैं बोलूंगा कि मेरे को जा रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज होंगे, काफी सब लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे होंगे, कॉल्स कर रहे हैं, they are trying to trace, there's going to be traveling expenses, there's going to be office expenditure, right or wrong? There is going to be administrative expenses also or no? अब सब अगर मैं एनिमल्स के ऊपर सब 1 करोड़ की बिस्किट ले लूंगा, मैं पार्ले जी बिस्किट, तो उसको स्टोर करने का जगह, उसको बांटने के लिए जो जाएंगे वो सब का पैसा कौन देगा? पैकेजिंग का पैसा. यू अंडरस्टैंडिंग? सो इवन सम अमाउंट विल गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और नो? तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के ऊपर वो लोग ने कैप कर दिया, इससे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में नहीं यूज कर सकते. नहीं तो लोग क्या लेंगे, पूरा ही एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कर देंगे कि डे टू डे फंक्शनिंग में हम लोग ने यूज कर दिया. सो नॉट एक्सीडिंग मतलब मैक्सिमम कितना पैसा यूज कर सकता हूं मैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? मैक्सिमम 50% फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. समझ में आया ये? सो मैक्सिमम 50 lakhs which is also a very big amount can be used for administrative or day to day routine expenses. Moving forward, section 9. section 9 भी सिंपल है. Now section 9 talks about power of central government to prohibit the receipt of foreign contribution. अब इसका मैंने नोट्स बनाया है, उसमें थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, वही चीजें हैं पर थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है. ओके, सो फर्स्ट थिंग है, यहां पे देखोगे फर्स्ट 3 पॉइंट्स टॉक्स अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड द लास्ट 3 पॉइंट टॉक्स अबाउट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. पॉइंट सेम है. The central government is empowered to, okay, section 9 कर रहे हैं, is empowered to prohibit any person from receiving foreign contribution, require any person to obtain prior permission. किसको बोल सकते हैं? पहले परमिशन ले लो. और थर्ड किसको भी रिक्वायर कर सकते हैं? आप इंफॉर्मेशन फर्निश करो. सो 3 things. What is that? Either I can prohibit you, or I can tell you to please take prior approval, or lastly I can tell you to furnish additional information. Clear है ना? For foreign contribution. वही same next 3 points will be for foreign hospitality. Either I can prohibit you from receiving foreign hospitality, or I can tell you take prior permission, or I can tell that furnish such information as is required. अब ये कौन सी गवर्नमेंट बोलेगी? It is a central government because it's a central legislation. Next, so ये भी section 3 में यही लिखा है, prohibit, obtain prior permission और furnish information. Then come to section 10. So we've done section 9 also. Section 9 था power of central government. Now we're doing section 10. Now let's see what is section 10 talking about. Power to prohibit payment of currency received in contravention of the act. Now tell me one thing, अगर किसी ने hypothetically
ले लिया पैसा और उसने ये पढ़ा नहीं है लॉ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर मेरे को नहीं पता था कि ये सब FCRA करके लॉ है, मैंने डोनेशन उठा लिया, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी बिठाएगी कि क्या आपने पैसे लिए थे. वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी के बाद में सेटिस्फाइड है दैट एनी पर्सन is in custody of any article, currency or security and has received such money in contravention of the provision of the act, it may by order prohibit such person from paying, delivering, transferring or dealing with such money whatsoever, and it will tell that you please hand it over back to the central government. Clear enough? So section 10 not that important. अभी जो भी सेक्शन है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. देन कम्स रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन्स. लेट्स सी. सो सेक्शन 10 क्या था? समवन हु इज टेकिंग द मनी रॉन्गली. सो योर obtained foreign contribution wrongly, तो दे विल से भाई यूज मत करना, उसको वापस दे दो. सेक्शन 11. सेक्शन 11 क्या होता है? Now you tell me, I think this you will be able to tell. Every time you would like to go and take approval, or you would just like to get one certificate which certifies that I am a NGO working for the benefit and then I can freely take contributions. What do you prefer? Every time going and taking approval? Certificate. So इसमें क्या होता है? अब ये सर्टिफिकेट्स कौन ऑब्टेन करता है ना? बहुत ही सिंपल है, NGOs. अब देखो, a person having a definite cultural, economic, educational, religious, social program shall accept foreign contribution if it obtains a certificate from the central government. Every person, अगर तुमने सर्टिफिकेट नहीं लिया तो हर टाइम तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा. Every person may, if he is not registered with the central government, then can accept foreign contribution only after taking approval of the central government, and such approval shall be valid for such purpose, and you will also have to tell the source of the money. Clear है ना? तो section 11. Then comes section 12. If central government is satisfied that you have and conducted an inquiry that yes, you are a genuine NGO and you are working for certain benefit of society, then they will grant you the certificate. अब देखो section 12 में एक important part आएगा. An application by a person for grant of certificate shall be made to central government in such form and manner as it is possible. Central government, after making inquiry, if it is of the opinion, it will register such person and grant him a certificate. In such cases, in cases where the central government does not grant within a period of 90 days a certificate, or it shall communicate the reasons to the person, and that person shall not be eligible for grant of permission if the certificate has been suspended or the suspension certificate continues. तो उसको जनरली 90 डेज के अंदर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा. नेक्स्ट, अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 4. बहुत ही सिंपल है. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी फिक्टिशियस बेनामी ट्रांजैक्शंस के लिए अप्रूवल देगी? अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि तुम्हारा एक जेन्युइन एनजीओ नहीं है, यू थिंक दे विल गिव अ सर्टिफिकेट? नो. तो यहां पे देखोगे कि कब तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. Okay, so let's see when. So the following conditions should be satisfied for granting the certificate. You should not be a fictitious or benami transaction. You should not be prosecuted or convicted for doing any kind of indulging in activities which are aimed at conversion from one religion to another. धर्म परिवर्तन पता होता है. आप कोई ऐसा पैसे ले रहे हैं कि लोगों के धर्म बदलेंगे,
tell me one thing, in a country like India there would be riots or no? The entire religion itself in India is a very big aspect. It can really create a kind of a unrest in the entire country. So if you're taking money to convert people into different religions, so it's not allowed. They should not be prosecuted or convicted for creating any communal tension or disharmony. Has not been found guilty for misutilization of the funds. Is not engaged in any kind of propagation of sedation or violent methods to achieve its ends. Sedition is inciting people to go against the government for violent ends. It is not likely to use foreign contribution for personal gains or to divert it for undesirable purposes. Has not contravened any of the act. Has not prohibited from accepting foreign contributions. Okay. Generally, these activities should be for those which benefit the society at large. This activity should not affect the sovereignty, security, public interest, freedom, fairness, friendly relations, harmony between religions. So the government, central government has to be very careful who they are granting the license to. Then comes suspension of certificate. कौन ग्रांट करता है सर्टिफिकेट? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सस्पेंड भी कौन कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट pending consideration of a question of cancelling the license on any of the grounds mentioned in section 14 subsection 1. तो अभी देखेंगे हम लोग. This we are doing section 12. Okay, so I'm not writing all these sections, that you can just note it down. Section 11 onwards. यहाँ तक important sections I have written it down. So now we'll just go a bit faster since it's not important. Then comes suspension of certificate till that cancellation का order आना बाकी और investigation चालू है तब तक ये तुम्हारा suspend रहेगा. Can suspend the certificate for a period not exceeding 180 days. Then comes cancellation of certificate of your certificate. ये कब cancel हो सकता है certificate? Okay, it will lead to a heartbreak. Now when would it do? यहाँ पे भी कंडीशन दी है. लेट्स सी. बहुत ही सिंपल कंडीशन है. सबसे पहले whatever information you had given was incorrect or false. Second, you have violated the terms of the certificate. Third, the central government feels that in the public necessity it is necessary to cancel your certificate. Fourth, you violated any of the provisions of the act or the rules. Fifth, if the holder of the certificate is not engaged in any reasonable activity in his chosen field for the benefit of society for 2 consecutive years or has become unoperational. अगर तुम defunct हो चुके हो, नॉन फंक्शनल, तो भी तुम्हारा लाइसेंस फिर अभी कैंसिल कर देंगे. Then they've said this is again important. इसके ऊपर अमेंडमेंट भी आया 2020 के अंदर, but that amendment is not there for you all. It has come around in December only. Means not applicable for the December attempt. So इसमें क्या है? बहुत ही सिंपल है. You can mark it as important. जो भी पैसा आएगा फॉरेन सोर्स से अलग अलग अकाउंट्स में ले सकते हो, एक ही अकाउंट में लेना चाहिए. One account. So it should be taken in a single account. And you think it should be taken in scheduled banks or non-scheduled banks? Scheduled banks बता देता हूँ मैं. RBI के Schedule 2 के अंदर mentioned होती है. They have a certain good net worth. They are much better than non-scheduled. तो ये जो भी पैसा आना चाहिए it should be coming through scheduled banks or unscheduled banks? Scheduled. तो ये जो भी पैसा है it should all come through scheduled banks like HDFC Bank, ICICI Bank. ये सब scheduled banks हैं. So every person who has been granted a certificate or given permission shall receive the foreign contribution
in a single account through any one of the branches of the bank, and will specify such person shall open one or more accounts in one or more banks. Okay, but it should be after it is told to the central government. Next, intimation. जब अकाउंट में पैसा आएगा तो हाउ विल यू फील, हैप्पी और सैड? एक्सट्रीमली हैप्पी. तो ये खुशी तुमको सबको बतानी पड़ेगी. You will have to intimate the central government when you receive these funds. So every person who has been granted a certificate and has to intimate the amount of each contribution received and the source and the manner where it will be utilized and where it will be spent and the purpose, he will have to tell it to the central government. So you will have to intimate the purpose, the source of funding. You will have to intimate the manner in which you will receive. कितने 3 tranches में आएंगे, एक ही बार में आएगा, etc. Okay. Then you will have to maintain an account. The order for audit. Any person who has been granted a certificate fails to furnish any intimation, the central government has any reasonable cause to believe that you have contravened, okay, then he may order audit of the books of accounts, and then you can keep it as a just read. They have a right to inspect your books of accounts, search, and if they find anything wrong, they can seize and confiscate your things. And if you are unhappy with the orders, you can go in appeal. It can be made to the Court of Sessions or to the High Court. Penalty is there. Just read, not important. And I think we are done with the chapter.